वेलकम बैक फार्मर्स टेक्निकल पावर वीके, किसानों और मशीनों के साथ हमेशा। तो अभी हमारे पास जो मशीन आई है वो है स्टिल FS55, जो कि हमारे इलाके में कॉमन मशीन है, सबके पास है। तो उस मशीन में क्या था, पिछले साल कस्टमर ने कार्बोरेटर डलवाया था, तो अभी कस्टमर को फिर से दिक्कत आने लगी। तो हमने अभी मशीन को डायग्नोस किया है, तो उसमें जो है ऑयल सील लीक है। तो हम ऑयल सील डाल के आपको दिखाते हैं किस तरह से ऑयल सील को डाला जाता है। लाड़ी जानी जितरो खियानी थी सोरी छोटू साड़िया पारू मेरो मान बायो ए गो जो इनल की यो दुई लेनो ये ते बेटा छोटू पो मो रयो चलो कोई गोला ले फाई दी ते Kala ya nanti enggak gue beli kala ya lebih
Toma, mother. तो आपने देखा किस तरह से हमने FS55 में जो है ऑयल सील चेंज की। हमें भी पहले लग रहा था कि कार्बोरेटर में कुछ दिक्कत है, पर जब हमने इसको अच्छे से डायग्नोस किया, एक दो बार जब हमने इसे अच्छे से चेकअप किया, तब हमें पता चला कि इसकी ऑयल सील लीक है। ऑयल सील जब लीक होती है, एक तो बाहर आपको ऑयल गिरा हुआ मिल जाएगा फ्लाईव्हील के पास या रिकॉइल के साथ कहीं भी, या आपको लग जाएगा पता है तेल कहीं भी बाहर रिस जाएगा। और दूसरा ये कि जब भी मशीन गर्म होने के बाद, जब गर्म हो जाएगी उसके बाद फिर वो स्टार्ट नहीं होगी या ओवर रेस होने लग जाएगी, जैसे वो एयर लेगी। ठीक, यही सब चीज़ें होती है जो कि ऑयल सील का पता चलता है कि ऑयल सील इस तरह से गड़बड़ है। तो जैसे पेशेंट होता है वैसे ही मशीन होती है, पेशेंट को भी अच्छे से डायग्नोस करना पड़ता है कि कहाँ पे बीमारी है। तो उसी तरह से हम मशीन को अगर अच्छे से डायग्नोस करेंगे तो हमें पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी कि किस तरह से कहाँ पे मशीन ख़राब है। जुड़े रहिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए टेक्निकल पावर वीके के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।